Good morning, team. Welcome to the morning call. We start the technical and derivatives outlook. We start with Nifty. So in yesterday's session, we saw that Nifty has seen some bounce from the levels of 17,000. At the close, the Nifty was up by 140 points and it closed at 17,123 levels. Most of the sectors like PSU, FMCG, and private banks were something which saw a good amount of buying, whereas a little bit of selling was in the pharma, consumer, and the healthcare sectors. Coming to technical levels for the Nifty, what we are observing for the last 3 days during this week, Nifty is holding to 16,800, 16,900. So this is the level from where the buying is coming in, and also this is also the lower side range of the for the week. So now above 17,000, it's a good scenario, and the close is at 17,100. So what we believe from the technical point of view, 17,235 is the levels which we are watching. So above 17,235, there would be a fresh buying which can be seen in the Nifty, and we have a higher side range of 17,500. So most probably above 17,235, we can see Nifty going towards 17,500. Coming to Bank Nifty also 39,000 is a very strong base. In the last trading session, once it broke that 39,000 and some amount of selling was seen. But again, since the Bank Nifty is one of the outperformer, and there are a lot of put writing at 38,800, 38,900. So that is one of the reason why the Bank Nifty also bounced from those level, and we saw a recovery in banking in yesterday's session. Only ICICI Bank was the only one counter which was in red. Beside that, all of the counters had strongly closed in green. So coming from the level point of view, Bank Nifty 39,300 is a level to watch. Being a weekly expiry, both we expect the lower levels of buying to come in, and maybe most probably the weekly we will see the expiry at 17,200, close to 17,200 and 39,300 on the Bank Nifty. So bias for the day is bullish, and I think at lower levels we should be looking to add long positions. There are few stocks which are looking positive from the technical point of view. In reality, DLF is looking positive. Bharti Airtel is also looking positive. Axis Bank is already it's given a run up. So most probably we cannot add a long position. But if you're having a position, you can hold on to that position. And in the closing hour in yesterday's session, we also saw a buying in TVS Motor. So we believe TVS Motor will also trade with positive bias. And coming to the derivatives outlook, there were longs added in the both Nifty as well as Bank Nifty. Nifty added long position to tune of 0.9%, which was the addition of 0.01 million shares. The advance decline ratio was positive in yesterday's session, 166 on the advances and 31 on the losing side. Coming to put call ratio also gained strength. It from 0.72, it has closed at 0.95%, which is also a little bit strength coming into this sector. Coming to Bank Nifty also added a long position to the tune of 6.24% with the change in open interest by 13.33 million shares. The major additions were seen in the 39,000 call options by 111.3 million shares, followed by 38,800 put options by 58.1 million shares. The top three long build-ups seen in yesterday's session was Navin Fluoro, TVS Motor, and Hindustan Petrol, HPCL, whereas the short build-ups were seen in About India, Whirlpool, and Polycom. Coming to FI data, the FIs have added little bit of long position in yesterday's session, close to some 12,000 odd contracts. Long short ratio is recovered from 14 to 19, so this is a slightly on the higher side. Beside this, we are also yesterday we have come up with the Diwali pack. So I would discuss the same. We have come up with the Avenue or supermarket, which is a DMart. So we are recommending a buy at the current price 4337, and the upside potential is 19% in the stock. Another one is Blue Dart Express. We are recommending a buy at 8986, which is a CMP. The potential upside is 28%.
Next is City Union Bank. We are recommending a buy at 186, and the potential upside is 18%. Next one is Jubilant Foodworks at 604, and the upside is 27%. After that, Kolte Patil at 344, the upside is 34%. And then Mahindra CI Automotive at 304, and the upside is 25%. Next is Tata Power at 280, and the upside is 19%. So we recommend all the dealers and the RMs to please promote this weekly pick and just circulate in a very strong manner, as we expect the coming year to be a very robust year. That's all from the technical. Over to Archana, madam. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So, few updates from my side, starting with Tata Power. So, Tata Power to develop 7 megawatt solar project at Pantnagar manufacturing facility. And this installation is expected to generate 215 million units of electricity, potentially reducing carbon emission by over 1.7 lakh tons. So that is a positive development on the company's front, and the stock may react positively on this. On ITC Infotech, the company has incorporated subsidiary in Brazil, and it said that this will be like it has received a registration certificate for incorporation of this subsidiary, and it bodes well for the company's IT division to do well. On Mishtan Food, the company plans to set up ethanol project in Gujarat, expects annual revenue of close to 3,500 crores. And post this, we believe that the plant is expected to be operational in somewhere 2024, and that is like positive for the company's front on the sales going pretty strong going forward. On Sterling and Wilson Renewable Energy, the company has reported loss of 299 crore in Q2 FY23. However, it has won orders worth 2,200 crores from NTPC. Overall, though despite the order book is strong, the numbers are not that great and could be the stock in a negative territory today. On Panisha Biotech, the Serum Institute of India has offloaded 2.2% stake. So that is kind of negative for the company. On CSC, the company is to consider fundraising of 300 crores on October 15. The company said that it will be like this is a proposal for issue of secure unlisted non-convertible debentures, and the board will approve it, post which the money raised will be utilized for the company's operations. On Adani Wilmar, the company expects revenue to grow in low single digit in Q2 FY23. The company has said that the food and FMCG basket continued its growth trajectory similar to previous quarters, registering growth of over 40%. Its industry essential business also grew close to 20% during the quarter and H1. On Suven Life Science, the company's board has got nod to raise 400 crores via right issue, and it will be in the ratio of 1:2. On Power Grid Corporation of India, LIC has offloaded 2% stake in Power Grid, so that is kind of negative for the company. On Adani Ports and Special Economic Zone, the company has received letter of award from West Bengal Industrial Development Corporation Limited for development of deep sea port at Tajpur, West Bengal, and that will be on design, build, finance, operate, and transfer basis. So pretty positive for Adani Ports. The stock will react positively on the news. On Interglobe Aviation, the airline will wet lease up to 4 wide-body Boeing 777 aircraft on interim basis to cover the shortfall in its international operations. On Coal India, BHEL, IOCL, GAIL, NLC India. So the Coal India has signed 3 separate MOUs with BHEL and the rest of the companies I just discussed. On Reliance Part, the company and its subsidiaries signed executive document to raise 1,000 crore via debt from Vardhe Partners, which will be used for the debt resolution. NTPC has signed MOU with Siemens for demonstrating hydrogen co-firing blended with natural gas in Faridabad gas power plant. On sale, Deepam has annulled the proposed strategic sale of one of the iron and steel plant unit of the company due to insufficient bidder interest and government statement. Few more updates like SCL Tech, the company reported their numbers yesterday.
So HCL Technology is witnessing healthy TCV of 2.4 billion and product revenue are expected to improve from Q2 onwards. Cost efficiencies project synergy with products leading to mega deals and market share gain and improvement in ER&D to drive the IT services growth. So overall, so we expect US revenue CAGR of 9.8% over FY22-24. We have buy rating on the stock with the target price of 1095. On Wipro is seeing healthy traction in order book, and it has signed 11 large deals amounting USD 725 million in Q2. However, the slowdown in the consulting revenue and challenges in Europe, we are kind of cautious on the revenue growth going forward. Currently, we have hold rating on the stock with a target price of 425. On Sonata Software, the company has informed that it has won a deal from Ireland's telecommunication service provider to support standardization of the customer relationship management platform and grow Microsoft Dynamics in the Irish market. On Infosys, the company will declare its Q2 numbers today, so we'll look at the stock might be in action today. Also, Mindtree will announce their numbers, and Cyient will announce their numbers. So that's it from my side. I hand it over to Brijesh for further research updates, if any. Thank you, and over to you, Brijesh. Thank you, madam. Few more news from my end. There is an update on Suven Life Science that they have approved a right issue to the ratio 1:2 ratio, and the price rupees would be 55 rupees fully paid up share. One more update on PVR and so there is a one second. The PVR has announced that the shareholders have approved the proposed merger with the Inox merger on Wednesday, October 20. The meeting was considered followed by the NCLT directions. So earlier this year, both the companies said that they received the approval from the NSE and BSE. There is a news on SBI and HDFC. Both the lenders have announced their discounted interest rates at 8.4% as part of the festival offers. So earlier, the lending and mortgage, they had increased the rates by 0.5% after the Reserve Bank raised the repo rate by 50 points. But now they are just seeing ahead of the festival season, they are giving some amount of discounts. So that would be the positive for the SBI and HDFC. Siemens, there is a news that NTPC and company has signed MOU for demonstrating hydrogen company firing at Faridabad the gas power plant. So that would be a little bit positive for the Siemens. So, and next is one more news on Tata Power. The company to develop Tata Motors 7 megawatt solar projects at its Patna Nagar manufacturing facility. So that might be a little bit positive for Tata Power. Ugar Sugar Works, the company has received consents for operations for 645 KLDP distillery at Ugar plant. This Interglobe Aviation, there is a news that the airline will lease up to 4 wide-body Boeing 777 aircraft on interim basis to cover the shortfall in its international operations. And the Dish TV, there is one update. The Dish TV pays rupees 46 lakh to settle the SEBI probe on a alleged breach. So that is the news update for the Dish TV. One more is the RAC. RAC Power Development and Consultancy has handed over the special purpose vehicle NER transmissions to the power grid. So that is one of the updates. So in the last one, that what is the AU Small Finance, the private sector lender has hiked the fixed deposit rates by 50 basis points
to 7.5%. The senior citizen will get an interest rate of 8% on their fixed deposits. The hike in fixed deposit rates offers one of the most competitive fixed deposit interest rates in the industry. It's said that's a review in the market. So that's all from our end. Over to Hitendra for the Hindi updates. Hello. या थैंक यू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारी दिवाली पिक्स की। सो हमने दिवाली पिक्स रिलीज कर दी है। इसमें टोटल 7 स्टॉक्स है और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल अपसाइड हमें कोल्टे बाटे डेवलपर्स में दिख रहा है, जो कि करंट प्राइस 344 में है और 34% का अपसाइड दिख रहा है। सेकेंडली हम देखेंगे तो इसमें जुबलेंट फूडवर्क्स है, जो कि अभी करंट प्राइस 604 है, यहाँ से 27% का अपसाइड दिख रहा है। थर्डली हम देखेंगे ब्लू टार्ड एक्सप्रेस, वो कि 8,986 के भाव पर मिल रहा है और उसमें 28% के आसपास का अपसाइड है। और फिर हम देखेंगे उसके बाद महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, जो कि 25% का अपसाइड दे रहा है यहाँ से, जो कि 304 प्राइस के भाव में आ रहा है। एंड लास्ट हमारे दो है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि 4,337 है, यहाँ से हमें 19% का अपसाइड मिल रहा है। और उसके बाद है लास्ट में टाटा पावर कंपनी, जो कि 218 के भाव में आ रहा है, यहाँ से 19%। एंड सिटी यूनियन बैंक है, जो कि 186 के प्राइस में आ रहा है, 18% के करंट अपसाइड से। सो ये 7 टॉपिक्स है हमारी। सो ये से आप अपने क्लाइंट्स को और जितना से मतलब जितने भी डीलर्स हैं उनको आप आगे से भेज सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। सो अभी हम आते हैं न्यूज़ के ऊपर। सो अभी हम देख रहे हैं टाटा पावर डेवलप करेगा 7 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, जो कि पन्नगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में है और ये टोटल 215 मिलियन यूनिट जनरेट करेगा वहां से। तो ओवरऑल ये कार्बन एमिशन 1.7 लाख टन का रिड्यूस करेगा। सेकेंडली आईटीसी इन्फोटेक की जो सब्सिडरी है ब्राजील में, आईटीसी इन्फोटेक दो ब्राजील था, तो उन्होंने उसे अपनी होली ओन सब्सिडरी बना दी है और वहाँ पे उन्हें उसे रजिस्टर भी कर दिया है। मिष्ठान फूड्स ने प्लान किया एथेनॉल प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात में है। एनुअल रेवेन्यू वहां से उन्हें लगता है 3500 करोड़ के आसपास तक आएगा और कंपनी इसे प्लांट सेटअप करेगा 1000 किलो लीटर्स पर डे के हिसाब से। और ये प्लांट हमें लगता है 2024 तक स्टार्ट होगा। स्टर्लिंग विंडसर एंड सोलार के कल रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स में देखा जाए तो लॉस ही उन्हें पोस्ट किया 299 करोड़ का, बट हमने इनकी अगर ऑर्डर साइज देखी जाए तो 2200 करोड़ का ऑर्डर विन बुक में मिला है टोटल ओवरऑल। परेशा बायोटेक में देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसमें से 2.2% स्टेक ऑफलोड किया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा परेशा बायोटेक। सीएससी ने कहा है कि वो कंसिडर करेंगे फंड रेजिंग के लिए अक्टूबर 15 को। इनकी जो सिक्योर अनलिस्टेड एनसीडीज है उससे वे रेस करना चाहिए अब 300 करोड़ के आसपास। अडानी विल्मर एक्सपेक्ट करता है रेवेन्यू ग्रो होने के लिए लोअर सिंगल डिजिट्स में Q2 FY23 में, और उन्हें लगता है कि बट जो वॉल्यूम्स है वो एक्सपेक्टेड रहेगा डबल डिजिट के ग्रोथ में, जो कि फूड एंड एफएमसीजी बास्केट में कंटिन्यू करेगा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में और उसमें ग्रोथ आएगी 40% के आसपास में। इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स हमें लगता है कि वो ग्रो कर सकता है क्लोज टू 20% के लिए ड्यूरिंग H1। सुवेल लाइफ साइंस को भी बोर्ड से नॉड मिल गई है 400 करोड़ का राइट्स इश्यू करने के लिए और इसकी राइट इंटेलिजेंट साइज है 1:2 के आसपास। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में से एलआईसी ने अपना स्टेक ऑफलोड किया है 2% के आसपास तक, तो वीक नेगेटिव न्यूज है कि पावर ग्रिड के लिए। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के लिए, बेसिकली कि डीप सी पोर्ट वहाँ पे डेवलप करेंगे ताजपुर वेस्ट बंगाल के लिए, और ये डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटेड ट्रांसफर बेसिस पे रहेगा। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव न्यूज है अडानी पोर्ट्स के लिए। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज को भी देखा जाए तो सैट के प्रोसीडिंग्स के हिसाब से जो उनकी ट्रिब्यूनल ने वो डिसमिस कर दी है और सेबी ने उन्हें 5 लाख का पेनल्टी लगाया गया है। इंडिगो एविएशन के लिए न्यूज उन्होंने जो इनकी जो वेट लीज है 4 बॉडी बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को वो इंटरिम बेसिस के लिए ली गई है, जो कि जो शॉर्टफॉल कवर करने के लिए, जो कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस। कोल इंडिया, भेल, आईओसीएल, गेल और एनएलसी ने तीनों ने एक सेपरेट एमओयू साइन किया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए और बेसिकली ये कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए रहेगा। रिलायंस पावर ने कहा है कि उन्होंने एक साइन के एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्रीज रेज करने के लिए 1000 करोड़ वाया डेट ये वर्दे पार्टनर से वो रेज करना चाहिए।
और एनटीपीसी ने भी कहा है कि उन्होंने एक एमओयू साइन किया सीमेंस के साथ, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा हाइड्रोजन को फायरिंग ब्लेंडेड नेचुरल गैस के साथ। और दीपम ने भी जो इनका जो स्ट्रेटेजिक सेल था भद्रावती स्टील प्लांट जो कि विश्वेश्वरैया एरिया में था, उससे वो कॉल ऑफ कर दिया क्योंकि उन्हें कोई इनसफिशिएंट बिडर नहीं मिला और कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिला गवर्नमेंट ने कहा। HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स देखेंगे तो ओवरऑल हेल्दी थे, और इनकी जो टीसीवी है वो 2.4 बिलियन के आसपास से भी, और कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स के चलते उन्हें लगता है मेगा डील्स मिल सकती है और वो उससे और आगे नेक्स्ट क्वार्टर में कंट्रीब्यूट कर सकता है 1% का रेवेन्यू। कंपनी ने देखा जाए तो 19% का सीसी टर्म से ग्रोथ किया गया है, और ओवरऑल कंपनी को कॉन्फिडेंस है ये 16 to 17% ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं। और यूएस रेवेन्यू भी देखा जाए तो के का 9.8% की ओवरऑल था FY22 से 24 में। तो करेंटली हमारी इसके बाद बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस 1095 के साथ। विप्रो के भी रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स देखे जाए तो ऑर्डर बुक के चलते 24% उनकी ग्रोथ हुई ईयर ऑन ईयर, और उन्होंने 11 लार्ज डील साइन किए $75 मिलियन की इन Q2, और $1 बिलियन की 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है बेसिकली। बट इस पे जो स्लो डाउन चल रहा है यूरोप में स्पेशली, और कंसल्टिंग रेवेन्यू, तो ये हमारी इसके ऊपर व्यू कॉशियस रहेगा रेवेन्यू ग्रोथ के चलते। तो करेंटली हमारी इसके ऊपर होल्ड रेटिंग है, टारगेट रिवाइज टारगेट प्राइस 425 के साथ। सो डाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर न्यूज है, कंपनी ने एक डील वोट किया आयरलैंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर से। बेसिकली ये इनका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करेंगे प्लेटफॉर्म को, और ग्रो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की डायनामिक्स एडिश मार्केट। पीवीआर को भी कंपनी से शेयर होल्डर्स अप्रूवल मिल गया है आइनॉक्स के 99% के लिए, 99% वोट्स दिए गए फेवर के लिए, मर्जर के लिए। सो आइनॉक्स और पीवीआर का एक पॉजिटिव न्यूज रहेगा, और कल ही ये मीट हुई थी। सो ये ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा। टारगेट प्राइस 2215 के साथ बाय रेटिंग है। इन्फोसिस कल Q2 नंबर्स डिक्लेयर करने वाला है, आज डिक्लेयर करने वाला है। सिमिलरली माइंडट्री भी नंबर्स आज रिपोर्ट करेगा, और साइन के भी नंबर्स आज ही एक्सपेक्ट आने वाले हैं। सो ओवरऑल ये की पॉजिटिव लेट्स मतलब इसके चलते हमें थोड़ा बाजार में स्टॉक्स में वो मोमेंट देख सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग द मॉर्निंग कॉल। यू मे नॉट डिस्कनेक्ट।